जी स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. लेट्स सी विच आर दीज कंपोनेंट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है lymph. Now what is lymph? Lymph is a fluid. It is a fluid. It is a fluid of lymphatic system. So the circulating fluid of lymphatic system. So I'm writing down it in bracket. Circulating fluid. Circulating fluid. Okay. Secondly, हमारे पास हैं lymph capillaries. Lymph capillaries are just like the blood capillaries. लेकिन यहाँ पर इनके बारे में एक बात है कि these are blind capillaries. We know that about blood capillaries कि blood capillaries जो हैं बनती हैं जब आर्टेरियोज डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज बनती हैं और कैपिलरी का नेटवर्क जब फिर ज्वाइन करते हैं वेन्यूज बनते हैं, उनसे फिर वेन्स बनती हैं. देयर इज नो डेड एंड इन द ब्लड कैपिलरीज. लेकिन इन टर्म्स जब हम ब्लड लिम्फ कैपिलरीज की बात करते हैं तो लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो ब्लाइंड होती हैं. सेकेंडली, जब हम इनके डायमीटर की बात करते हैं, इनके साइज की बात करते हैं, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म. दे हैव नॉन यूनिफॉर्म साइज डिपेंडिंग अपॉन द रीजन के बॉडी के किस रीजन में ये मौजूद है. We will talk about their size, the range of their size in the coming details of these components. Thirdly, हमारे पास यहाँ पर हैं lymph vessels. Lymph vessels जैसे कि नाम से इनके clear है कि lymph vessel must be the larger vessels of the lymphatic system. So these are larger vessels, larger vessels as compared to the lymph capillaries. Thirdly, हमारे पास यहाँ पर हैं lymph masses या lymph organs. Lymph masses जो हैं basically they have two main roles in the lymphatic system. Number one, they are production site. Of lymphocytes. जैसा कि हमने बात की थी लेक्चर 1 में कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा अहम रोल बॉडी की प्रोटेक्शन भी है, डिफेंस लाइन भी ये प्रोवाइड करता है. सो इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द प्रोडक्शन एरियाज जहां पर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. लिम्फोसाइट्स क्या है? दीज आर सर्टेन WBCs, टाइप ऑफ WBCs. वी नो दैट द रोल ऑफ WBCs, इनका काम बॉडी क्या प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है इन सर्टेन डिफरेंट वेज. सेकेंडली, लिम्फ मैसेज का एक और बड़ा अहम रोल है, वो क्या है? दे आर फिल्ट्रेशन साइट. वी विल टॉक अबाउट दैट कि इस फिल्ट्रेशन साइट का मतलब क्या है. ये वो एरियाज प्रोवाइड करते हैं जहां पर जो जर्म जो हैं, दैट इज बैक्टीरिया या वायरसेस जो है, जिनके दरमियान और हमारे WBCs के दरमियान एक बैटल फील्ड का समा मौजूद होता है. सो लिम्फ मैसेज जो हैं इन टर्म्स ऑफ लिम्फ नोड्स, ये वो एरियाज हैं जहां पर फिल्ट्रेशन होती है, क्लियरेंस होती है बॉडी की इन जर्म से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन इन डिटेल. We are going to discuss now lymph capillaries as first component of the lymphatic system. जैसा कि हमने बात की कि lymphatic system की ये जो capillaries हैं, these are blind capillaries, that is these are dead, these have dead end. These are blind capillaries. Secondly, their size is non-uniform. इनका size non-uniform होता है. By non-uniform we mean कि हमारा मतलब ये है कि इनका साइज डिपेंड करता है कि ये किस किस्म के टिश्यू में मौजूद है. यूजुअली इनका साइज जो है इट रेंजेस बिटवीन 10 to 80 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज इन कंपैरिजन के इनका साइज जो है वो क्या होता है एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज. रिगार्डिंग ब्लड कैपिलरीज, दे आर larger in diameter than blood capillaries. Okay.
एंड what is the function of these lymphatic capillaries कि ये रोल क्या प्ले कर रही हैं. वी नो दैट कि ब्लड कैपिलरीज का रोल क्या है. ब्लड कैपिलरीज जो हैं ब्लड मटेरियल को, ब्लड में मौजूद मटेरियल्स को सेल्स तक पहुंचाती हैं. सो व्हाट आर लिम्फेटिक कैपिलरीज डूइंग, ये उन मटेरियल्स को जो टिश्यू फ्लूइड का हिस्सा बनते हैं, उन मटेरियल्स को दोबारा से ये कलेक्ट करती हैं. दे कलेक्ट substances, they collect materials or substances from interstitial fluid, and from interstitial fluid we know that interstitial fluid का मुराद हमारी टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी है. now let's talk about कि what happens कि क्या होता है कि जब टिश्यू फ्लूइड जब कलेक्ट हो जाता है, बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड जब कलेक्ट हो जाता है उन एरियाज में जो कि कहाँ मौजूद हैं, सेल्स के बाहर मौजूद हैं. सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कलेक्ट होने के बाद, जमा हो जाने के बाद एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है. वी से दैट, हम ऐसा कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स ओन सब्सटेंसेस कि वो एंटर हो जाते हैं किसमें, लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर हो जाते हैं. So here we have, we can see that we have a figure over here. हम यहाँ पर कैपिलरी का एक बेड नजर आ रहा है. कैपिलरी बेड, बाय कैपिलरी बेड you know that it means कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद है. और we can also see that ये ग्रीन वेसल्स, हमें ग्रीन लार्जर वेसल नजर आ रही हैं as compared to the blood capillaries. These are actually the lymph capillaries. So you can see that there is a communication, there is a the network of blood capillaries and lymphatic capillaries जो हैं ये एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन में काम कर रहे हैं. वो इंटरेक्शन क्या है, we can see in this figure very clearly. So कैपिलरीज में से मटेरियल निकलने के बाद जब टिश्यू फ्लूइड का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत उनमें से मटेरियल जो हैं, बहुत सारे मटेरियल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एंटर हो जाते हैं टिश्यूज के अंदर. सो assuming that कि we have a blood vessel, blood capillary here, यहाँ से मटेरियल्स जो हैं इस टिश्यू फ्लूइड का हिस्सा बन जाएंगे यहाँ पे. From this tissue fluid, these materials then will be taken up by these cells. इनको दोबारा से फिर सेल अपना हिस्सा बना लेंगे. सेल में से निकलने वाले बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा बनेंगे वो इस तरीके से इस एरिया में आ जाएंगे, इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएंगे. एंड फ्रॉम हियर मैनी मटेरियल्स डायरेक्टली आर टेकन अप बाय द ब्लड कैपिलरीज, बट we know that many cannot be taken up by the blood capillaries and they become part of the lymphatic capillary. So this is how lymphatic capillary is taking up the material from the interstitial fluid. Interstitial fluid जब इकट्ठा होता है, जब इन स्पेसेस में इकट्ठा होता है, accumulate होता है, it exerts a pressure और इस प्रेशर की वजह से lymph जो ये fluid है एंटर हो जाता है इस lymphatic capillary के अंदर. You can see that, we can see that very clearly. It is blind from here. It has no extension from here. Now, when the interstitial fluid, substances from the interstitial fluid enter into the lymphatic capillary, what happens then? This substance, this material, now which has entered into the lymph capillary, now it is called as lymph. The material present here is called now lymph. The second component of the lymphatic system, which we are going to discuss, is lymph. We know that lymph is basically the circulating fluid of the lymphatic system. The circulating fluid. Now, what is present in this circulating fluid? इस circulating fluid के अंदर क्या मौजूद है? As you know that कि ये lymph बनता है कब? जब interstitial fluid से substances जो हैं lymphatic capillary के अंदर enter होते हैं. तो जो fluid अंदर इस lymphatic capillary के इस वक्त मौजूद है वो है lymph. Now, what is the composition of this lymph? Let's just write down its composition here. Okay,
कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस लिम्फ के? सबसे पहले नंबर 1, एज इट इज फ्लूइड तो इट्स मस्ट हैव वाटर इन इट, सबसे पहले पानी. Secondly, it has got some waste materials. It has got some damaged cells. Remember that we are talking about we are not just talking about the lymph that has just entered from that. We are not just talking about that interstitial fluid that has just entered into the lymphatic capillary. We are talking about the whole composition of the lymph that is also present in the bigger lymphatic vessels, and it also had got germs there which are being cleared by the certain WBCs. So let's just write down, it also has got WBCs. Okay, it also has got proteins in it. It has got salts in it. It has got glucose in it. It also has got fat molecules. You must have read that a blind extension of the lymphatic capillary in the digestive system that is called as lacteal. हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. We know that lacteal जो हैं उन large fat molecules को जो कि डायरेक्टली लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर एंटर नहीं हो सकती, जो ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकती, दे आर कलेक्टेड बाय द lacteal that is part of the lymphatic system. So fats are also present in lymph. Remember that there are no RBCs present in lymph. And one very important thing, the composition of lymph is not something very constant. It varies. It is a variable. It varies depending upon it depends on what? It depends on the site where the lymph is being, where the lymph is originating. So it has a variable composition depending upon the site of its origin. So his lymph, that is ये वो lymph जो है the circulating material अपनी इस composition के साथ which we have just talked about, इस composition के साथ lymphatic system के अंदर circulate करता है. Now we are going to talk about the next component of the lymphatic system, that is lymph vessel. Prior to that, let me just define lymph. Why not just define lymph? It is better to have a definition. So let me just write it down over here. Definition of lymph. Lymph is a fluid. It is a fluid. Although it has got solid component, that is WBCs, that is a fluid that is in transit. Transit means in between. It is transit between tissue fluid and blood. Okay, how it is in transition between the tissue fluid and the blood? Transit form of fluid between the blood and tissue fluid. We know that tissue fluid is the substance that is present between the cells. So I would write down it is present in tissues. By tissue I mean tissue से मुराद मेरी क्या है कि ये सेल्स के दरमियान में है, टिश्यू के सेल्स के दरमियान में है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में मौजूद है. Second, we have got
blood here. We've got blood. Let me just write down blood here. You know that what is blood? Blood is present. Blood is present in circulatory system. Circulatory system. And what is circulatory system? Blood circulatory system. Blood is a fluid that is present in blood circulatory system, and the tissue fluid is a fluid that is present in the intercellular spaces of the tissues. Now, where is lymph present then? The lymph is present here. Lymph is present here. Lymph is formed when the tissue fluid, the components of some of the components of tissue fluid enter into lymphatic system. Lymph is the fluid of lymphatic system. जैसा कि हमने पढ़ा था कि lymph जो है, lymphatic system या lymph जो है, ये उन मटेरियल्स को जो डायरेक्टली ब्लड का हिस्सा नहीं बन सकते, उन मटेरियल्स को ब्लड का हिस्सा बनाता है. तो टिश्यू फ्लूइड के मटेरियल्स एंटर होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में एंड दे बिकम पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हाउ दिस हैपेंस? टिश्यू फ्लूइड बिकम्स lymph and then it becomes blood. Therefore, it is in transit. It is in transit, a transit fluid between the tissue fluid and the blood. I hope this made the idea very clear.